स्लाइड को देखिबो आ मो वॉइस सुनिबो ठीक अछि ना Yes. लीव करली हला चलो आई विल डिस्कस द पेपर MERRL पिला माने स्लाइड Yes, टा ma'am. शेयर करूची हां आउ रेस्पोंड करूथबो सब म्यूट करी दियो स्लाइड शेयर करूची स्लाइड को देखिबो वॉइस सुनिबो हां कारण स्लाइड 1 शेयर कर देले मोर आउ वीडियो आसीबनी तो गोटे मिनिट सुनो पिला माने देखा गला ना Yes. Yes, ma'am. कौन कहूची फर्स्ट रे सुनो आई विल डिस्कस द पेपर MERRL ठीक है म्यूट कर दियो सब MERRL मैनेजिंग एम्प्लॉय रिलेशन एंड रिलेटेड लॉ ठीक अछि पेपर टा जेते बिग नाटा जेते बिग पेपर टा मध्ये सेते बिग राइट एंड इन दिस पेपर पिला गोटे किए गोटे ये करछो टिके काइंडली समस्त म्यूट कर दियो जेतेले जा दरकार हबो से अनम्यूट करके डिस्कशन करबो हला तो तो ऑलरेडी दीटा आज क्लास कंप्लीट हो जाई जानिचो MTT and HRPD and this is the MERRL paper see this paper having 5 unit in this 5 unit we will discuss various act right various kind of act that adopted by the Indian constitution towards the organization towards the society and towards the people so specifically we can say in this paper in your unit 1 we will discuss something related to industrial relation right trade union apart from this we will discuss something collecting WPM so these are some chapter it is there in your unit 1 likewise in your unit 2 3 4 5 different kinds of acts are there like Factories Act, Mines Act, Trade Union Act, Industrial Dispute Act, Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Gratuity Act, Provident Fund Act, Maternity Benefit Act. So these are the various kind of act it is there in your unit 2, 3, 4, 5. Right. And see, here we can say these are the act, it is applicable for the people, those are working in the organization. Those are working in the different industry. Those are working in the different establishment. That's why this paper also we can call as a labor law paper, industrial law, labor law, MERRL. Sabu means different name, but पाठ है समान आपको आम लेबर लॉ कही परिबा industrial law कही परिबा कारण this law this paper exclusively applicable for the towards the industry those people are working in the different organization right so that's why we can call as a industrial law आमे कहबा नै तार बही तुम जतले जीवो बुक स्टोर को बुक्स मागिबो MERRL कहि कि बुक्स नथिबो सेठी कोन थिबो लेबर लॉ थिबो इंडस्ट्रियल लॉ थिबो एमटी सब डिफरेंट नेम रथिबो तो एटा हला सेमिति गोटे पेपर तो सो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रे बुझिबो ध्यान रे सुनिबो टोटली स्पेसिफिकली ए पेपरटा क्लास जम्मा मिस करबोनी जदी मिस कलो टोटली बुझी परिबोनी हैला काहे कि एटा एक्सक्लूसिवली तमरो होची completely that designed by the Indian constitution and as per the rules regulation everything that by the Indian constitution that we will discuss जोटा कि हम डे टू डे लाइफ रे अवेल करूचे फैसिलिटी एक आ ऑर्गेनाइजेशन हमको से फैसिलिटी प्रोवाइड करूची राइट सो ए अनुसार हमें कोन करबा ए पेपरटा डिस्कशन करबा सो आको काइंडली केयरफुली सब दिन भलो भाबरे अटेंड करी सुनिबो हैला क्लियर ना पिला माने स्लाइड शेयर करबी Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay okay wait a moment
देखा गला कि पिला माने स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. See, dear students, so already I told you what? Now this paper having 5 unit, and in your unit 1, it is industrial relation, collective bargaining, WPM, such kind of things are there. So that this unit 1, we will discuss after unit 2. Why? Because unit 2 is the general concept is there. General concept related to labor law, labor legislation and industrial law. So first we will discuss unit 2, then after we will discuss unit 1. ହେଲା तो आज ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ कोन डिस्कशन करिबा यूनिट 2 रे कोन अछि यूनिट 2 रे अछि आपनकर जनरल कांसेप्ट फर्स्ट वी विल डिस्कस द जनरल कांसेप्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर लॉ व्हाट इज लेबर लॉ ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर लॉ then we will discuss something the scope of labor legislation, then we will discuss principles, these are the general concept and growth and development ए सब होला इंट्रोडक्टरी पार्ट रे पळेला then आमे जिबा आर्ट को सो यूनिट 2 टा फर्स्ट रे फिनिश करिके then आमे we will discuss unit 1 then आमे सेमती गोटे गोटे डिस्कशन मु करि करिका जिबे हला सो चलो dear students labor law we will discuss unit 1 concept of labor legislation or concept of labor law पिला माने what do you mean by law law माने कोन रे पिला माने law माने हमें काहा को कहबा Ma'am, rule and regulation which have to be followed by everyone to run smoothly. very good very nice law means it is the rules and regulation right जोटी law word आसिला जोटी law word टा implement कले से आसीगला कोन plenty of rules and regulation now who designed these rules regulation the designed by the Indian constitution so Indian constitution design certain law certain rules regulation towards the organization towards the people and towards the society so to smooth running the organization and to smooth basically run the society so that's why organization adopted certain law जदि से लॉ नथांता हमर जेतले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नथिला वंस अपन ए टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सेतले तो हमर सब एक्ट नथिला लॉ नथिला ताहाले कोन हमें बेनिफिट पाउतले नो if we will go back before no independence of India जेतले हमर कॉन्स्टिट्यूशन नै नथिला सेते बेले कोनोसे लॉ ही नथिला तो लॉ ही नथिला सो हमें किछि भी बेनिफिट पाउ नथुले सो आज के डेट रे कोन हला दो organize Indian constitution design some rules regulation and certain basically we can say the no a certain law towards the society and the organization that's why we are getting and avail the facility and benefits right and see law is a universal phenomena dear students it is a universal phenomena and having presence in all the society in the world if we can say law what is law now law is a universal phenomena why it is a universal phenomena because it is there in everywhere wherever you will go whatever may be the country whatever may be the area wherever you will go the law is there so ame jodi koiba Indian constitution India wise law banaichi American constitution ta wise law design karichi but law is there and we have to follow it that's why it is a universal phenomena and having presence in all the area all the society in the universe and we have to accept it and we have to adapt it आमे कहिबानी लॉ खाली कोन लॉ खाली ऑर्गेनाइजेशन रे अछि ना लॉ हम घरे मध्ये अछि लॉ को आमे घरे दो वी आर staying in a society and we have a family no and we have to adapt certain law rules regulation if we want to stay in the society आमे तो बिना सोसाइटी रे बंची परिबानी आमे कोन आइसोलेटेड हे कि जाई जंगल रे रहि परिबे कि नो सो आमे कोड रहिबा सोसाइटी रे जदि आमे सोसाइटी रहिबा हमको लॉ फॉलो करियो पड़िबो इवन आम घर भितर हमको बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करियो पड़छि आमे एम्ति किछि क्राउड करबानी वायलेंस करबानी जोटा कि हम नेबर को प्रॉब्लम होबो सेटा अगेन लॉ अगेंस्ट रे जाउछि जदि हस्बैंड वाइफ को
दुटा चटकणी मारला सेटा कोन कह जाउची ना इट इज अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आपण डोमेस्टिक वायलेंस कले विदाउट एनी परमिशन विदाउट एनीथिंग आपण कोनोसी काम बाय फोर्स करि परिबे नाही इवन आपणकर से फैमिली रे गोटे बॉन्डिंग जहां भी थाउ आपणकर नो so if you are doing such kind of things in your home that we can call as a domestic violence and we will not disturb any person though we are staying in a society आमे अननेसरी जन को फोन करि परिबानी हैला जे चाहुनी मु बारंबार ताको कॉल करूची सेटा कंप्लीटली लॉ रो अगेंस्ट रे जीवो मु ताको बारंबार मिस कॉल दउची लॉ रे अगेंस्ट रे जीवो मु जन को फॉलो करूची लॉ रे अगेंस्ट रे जीवो ए सब होची लॉ रो अगेंस्ट रे जाउची ता पे केते जे हमर आर्टिकल्स एक्ट स्टैट्यूट गवर्नमेंट डेवलप करिची नो सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग against the person जदि से चाहुनी the person is opposing no the person is not accepting so if we are doing such kind of things it is against the law the Indian constitution is the supreme power no Supreme Court and Indian constitution having a supreme power to adopt certain rules regulation towards the society for smooth and betterment of the people smooth running the society and betterment of the people right so what do you mean by law law जदि हमें define करिबा in a one line law is the entire body of rules and regulation applied by the court for the administration of justice in a one line how we can define law को हमें केमिति define करिबा so कोन कहूची law is the entire body of rules and regulation law रे कोन अछि full rules and regulation already आपण कहले entire body of rules and regulation applied by the court supreme authority supreme court behalf of the Indian constitution supreme court ଆମର president of India combinedly ସେମାନେ कोन करନ୍ତି decision नियंती final decision जोटा कि right applied by the court for the administration of justice आमे केते justice देई परिबा कोडे ना towards the people towards the organization and towards the society labor माने व्हाट कोड यूज हबो लेबर कोन घर रे गोटे लोक को यूज करबा कि हमें से व्हाट नो लेबर गोटे हाउस वाइफ को हमें लेबर कहबा कि नो labor law means it is completely related to the industry organization and different establishment it may be the private it may be the government it may be the public sector it may be the private sector so labor law deals with labor law कोन deal करूची now labor legislation deals with each and every angle towards the organization now what it deals with employment unemployment wages and salary right working hours working condition industrial relation trade union apart from these social security labor welfare all those things controlled by the labor law where now those persons working in the industry it is specifically for the age of जितने factor हमें कहले employment unemployment हो wages salary हो working hours हो working condition हो ये सब जिंस को किए control करूची ना labor law control करूची कोउठी ना those people are working in a different industry it means industrial employed person right so law what do you mean by law dear students it is a universal phenomenon having presence in all the society in the world and labor law what do you mean by law now law means it is the entire body of rules and regulation applied by the court for the administration of justice now labor law कोन ना labor law हैला ए सब जिंस को ता भितर हैला गोटे मेन फैक्टर labor law जोटा कि ए सब जिंस को हमर कंट्रोल करूची हैला बुझिले concept and definition चलो objective जीबा objective of labor legislation objectives of labor legislation I hope कि भलो भाबरे स्लाइड देखा जाउची see dear students कोन objective नै कि labor law आसिला labor मानकर नीड को फुलफिल करबा पई labor law आसिला लेबर की आमे समस्त जो माने इंडस्ट्री काम करचे ऑर्गेनाइजेशन में काम करचे इट मे बी द पब्लिक सेक्टर इट मे बी द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सो लेबर लॉ फिक्स सम ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किछटा ऑब्जेक्टिव फिक्स कला सेही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करबा पई कहि के लेबर लॉ आसिला ना कोन ऑब्जेक्टिव थिला
Now the objective of labor law, labor legislation to labor standard increase. कौन करिबो ना labor मानकर standard increase. Standard means the standard of living of a labor. It must be increased. How? While the organization will provide various facility and benefit towards the labor, towards the worker, towards the employee, definitely the standard of living of the workers, labor and the employee can be enhanced, increase karibo. And simultaneously, if the organization will providing the economic condition, healthy economic benefit, economic condition enhanced, it means healthy economic benefit, handsome full remuneration with other financial benefit. Well, the organization will provide to the worker. Now, what it including? Now, timely wages and salary, incentive, increment, timely increment. Apart from this, timely bonus, gratuity, provident fund, all the financial benefit if the organization will provide towards the worker, towards the employee, then definitely the strong economic condition, the financial, the every worker, the financial condition, it can be enhanced. That objective fixed by the Indian Constitution towards the industry and guarantee rights to the labor. So labor, those people are working in the organization, having, it must be some rights. Rights rahu. जो rights को नहीं ସେମାନେ कौन करिवे organization रे freedom freely काम करि परिबे. They should work freely in the organization while they will adopt having some rights. जदि पिला जदि पिला माने हमें कहिबा हमर आजिका डेट रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार गोटे ठक ठक होची प्लीज म्यूट करिवे. जदि आजिका डेट रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम मानक हे पिला माने ताले को कहिबी बाध्य होई कि सब आग ऑल म्यूट कर दबा पई बोल. आपण माने जदि एमती करिवे ताले सब आग ऑल म्यूट करा होई जिवो. अच्छा आने कथा आने मैडम सेपटू म्यूट कर दियंतु. देखिले कोन कहइबो कहिले हां मैम हे आपण मानक हे गला ना. आपण मान जदि एमती डिस्टर्ब करियो ताले केमती होबो. गोटे गोटे मिनिट आपनकर इंपोर्टेंट हैला. तो चल पिला माने ताले मते कहंतु आपण हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमकु कोन कोन राइट्स देछि कहिले हम सब जानचे. कौन कौन आमर राइट्स अच्छी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कौन अच्छी आम पाखे मैम राइट्स ऑफ ओपिनियन फंडामेंटल राइट अच्छी पिला माने. ओके वेरी गुड. हाउ मेनी राइट्स वी हैव पिला माने एचआर पिला माने पुनी कौन ना आमर मोबाइल रे बड़ा खोजी चल गूगल रे. वेरी गुड. 6 फंडामेंटल राइट्स हैला. 6टा फंडा आगुर हमर 7टा थिला. एटा अछि आपन गोटे चैप्टर एथि मने रखिबे पिला माने कारण आपनकर गोटे 5 मार्क रो 10 मार्क रो क्वेश्चन आछो 8 मार्क रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लेजिस्लेशन कहि के गोटे 5 और 8 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो. सेटा आपन गोटे चैप्टर अछि यूनिट 2 रे. तो सेति पई एथि ताको मन रखि देबे हैला. कोन गारंटी राइट्स टू द लेबर खाली कोन लेबर को दिया गला टोटल होल सोसाइटी को दिया जाय छी नेशन को दिया जाय छी. हमें प्राउडली हम राइट्स को हमें एंजॉय करूचे. वी आर एंजॉयिंग आवर राइट्स जोटा कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार केही हमटो छडी कि नै परिबेनी केही भी सेटा को हमें हमर राइट्स को हमें हमर सेटा हमर अधिकार. दो वी आर ए पर्सन and we are staying in India and we are the citizen of India, right? तो कौन कौन पिला माने राइट थिला हमर आगुरु 7टा राइट थिला. राइट टू प्रॉपर्टी गोटे थिला जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी टा हमर इना ताकू फंडामेंटल राइट रो रिमूव करिकि तो अदर राइट्स रे रखा जाय छी. राइट्स अछि किंतु एथिरे हमर नै राइट. तो प्रेजेंटली हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थिला ना 7 फंडामेंटल. नहीं सेटा अछि ना 7टा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ताकू छडै दबा ना कोन. सेटा हला आपन को 5टा राइट जदी आपन वायोलेट करले 6 नंबर राइट पर एक्टिव होई जिवो.
सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी अछि सेटा हमर 6 फंडामेंटल राइट रे अछि 7 टा थिला राइट टू प्रॉपर्टी हैला तो प्रॉपर्टी टा एना लीगल राइट हे गला आ सेटा आपनकर सेटा हला आपन कोन कहले लीगली आपन प्रॉपर्टी को ये करि परबे सेटा मौलिक अधिकार नै फंडामेंटल राइट आ नै लीगल राइट सेटा आपन राइट टू प्रॉपर्टी 7 नंबर राइट हैला तो हमर इना प्रेजेंटली केतरा राइट्स अछि स्टूडेंट्स 6 टा राइट्स अछि मने रखिबो तो आमे मानते छुआ बळ पढी के आछे किंतु स्टिल आमे भूली जाउचे किंतु आकु आमे समस्त को जानिबा दरकार ईच एंड एवरी मोमेंट कारण हमर से अधिकार हैला तो कोन राइट देला राइट टू फर्स्ट देला राइट टू इक्वालिटी प्रथम राइट टू इक्वालिटी सेकंड है राइट टू फ्रीडम थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सब जानी छंती खाली से मुझे कहि दोची प्रथम फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी सेकंड राइट टू फ्रीडम थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फोर्थ राइट टू रिलीजियन फोर्थ राइट टू एजुकेशन फिफ्थ राइट टू रिलीजियन सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज तो डियर स्टूडेंट्स हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 टू 35 आर्टिकल 12 टू 35 भितरे हमर फंडामेंटल राइट सब किछि इंक्लूड करा जाउछि आर्टिकल 12 एंड 13 फंडामेंटल राइट भितरे आसीबनी काहे कि हमर फंडामेंटल राइट स्टार्ट होछि आर्टिकल 14 रो ताहाले मैडम 12 13 कोन कहिले 12 13 हला इट इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवरऑल इंट्रोडक्शन सेतिरे रखा जाइछि बट आमे कहिला लो कहबा इट इज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 बट हमर सेतिरे इंट्रोडक्शन पार्ट अछि कोटी 12 और 13 14 रो हमर स्टार्ट हला राइट टू इक्वालिटी सो राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी मींस कोन राइट टू जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 टू 18 अछि राइट टू इक्वालिटी इट मींस there should not be any kind of discrimination जोटा कि हमको से राइट्स दिया जाइछि जोटा कि इंडस्ट्री रे ऑर्गेनाइजेशन रे हमें कोनोसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करि परिबा नाही राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी मींस ऑल आर इक्वल इन केस ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर मैरिटल स्टेटस प्लेस ऑफ बर्थ रेस ए समस्त भीतर हमें समस्त हेले समान कास्ट को हमें गोटे हिंदू रिलीजन हिंदू मुस्लिम डिफरेंशिएशन करि परिबानी कास्ट जनरल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डिफरेंशिएशन करि परिबानी रेस कला कला गोरा भेदभाव करि परिबानी ए सब पांचटा छटा ता भितर कांसेप्ट रखा जायछि जोटा कि हमें कोनोसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करि परिबानी अमंग दी पीपल दोस आर वर्किंग खाली इंडस्ट्री पाई नाही एटा तो ओवरऑल हम इंडिया पे हिची किंतु इंडस्ट्री पाई एटा हमें जोटा कि डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन रे करि परिबा नाही राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम फ्रीडम टू स्पीच आगुरु दिया जाय नथिला कहिबार अधिकार इन फ्रंट ऑफ सुपीरियर इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयर यू कांट स्पीक नो ओनली यू कैन लिसन तमे खाली सुनिबो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट यू हैव टू ओबे इट देयर इज नो चॉइस एंड अल्टरनेटिव अर्लियर बट नाउ you have a right you can speak in front of the employer but speak ता माने नहीं कि तमे कुछ भी कहिबो ता माने नहीं कि तमे कुछ भी माने ये करिबो no you while you will speak you have to maintain your boundary you have to maintain your limitation you have to maintain your certain you have some certain limitation no आपण को फ्रीडम दे देली आपण कुछ भी आसी कि मते कहिबे no 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 आपण कहिबार अधिकार हमें देलो but you have to maintain your limitation you have to maintain your boundary like right to freedom to speech freedom to move anywhere in the country ता भितर बहुत सारा राइट्स अछि हैला so right to equality right to freedom right against exploitation ता परे गोटे exploitation रो वर्ड मध्ये अछि एटी मन रखितेबे exploitation exploit करिबानी exploit means any kind of means exploit means what any kind of torture any kind of mentally physically no kind of exploitation should not be there exploit towards the child exploit towards the woman exploit anyone ame kari pariba nai mentally jodi amuku ki asi ki kichu harshly kichu gote katha कहूची जोटा कि मो मेंटली डिस्टर्ब होउची सेटा को मध्य हम एक्सप्लॉइट कहिबा there should not be there exploitation towards the women like हमें कहूचे कि exploit kind of human trafficking जोटा कि so सब आगो kind of exploitation रे जाउची right so हमें towards the women towards the child specifically से दी रखा जाइची article सबो so it must be we have to maintain हमें से टाइप रो समान को सहित मेंटेन करिबा neither physically nor mentally kind of human trafficking ए सब को हमको स्टॉप करिया को पड़िबो so right against exploitation हैला जदी होउची तो हम जनक सहित होउची हमें देखुचे तो we can take this step no
नाइ कि आमे ताकू से तार होची मोर कोन जाउची ना सेमती नुह ताहाले सोसाइटी हमर आ रहिबन तो हमकु मध्ये सेठी हम स्टेप नबाकू पड़िबो हम नेबर के गोटे एक्सप्लॉइट होची सो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी आई हैव टू टेक स्टेप मु जति किछि करि पारनी अछंती ता पई पुलिस अछि ता पई सब किछि अछि जोटा कि मु ताको एटलीस्ट प्रोटेक्ट करि परिबे right against exploitation right to education to all आज का डेट रे मोदी रो स्लोगन कोन एजुकेशन फॉर ऑल समस्त को एजुकेशन दिया जीवो इलिटरेसी रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इन आवर कंट्री इलिटरेसी हम कंट्री रहिबेनी ऑल द पर्सन मस्ट बी लिटरेट केते केते पर्यंत ना अप टू 14 years 14 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष काहे कि व्हाई मैम 14 years not more than that ना हमें 14 years को हमें नोचे as a we can treat as a child द गोटे चाइल्ड को सब प्रकार एजुकेशन दिया जीवो तापर तो से एडल्ट एडल्ट को पळेबो तो सेते बेले गला बेले सी तार क्वाइट मैच्योर्ड हे जाइबो से तार डिसीजन नबो बट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल दिस इज अ स्लोगन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्लोगन बाय मोदी जी राइट so education for all it means the free and compulsory education free education दबा compulsory education free माने ना आपन को कोर्स फी दबाव पड़िबो ना आपन को ट्यूशन फी दबाव पड़िबो ना आपन को दिया गला मन को कोन मिड डे मील दिया गला यूनिफॉर्म दिया गला बुक्स दिया गला सब किछि फ्री अप टू 14 years right and compulsory सब every family father mother it is a responsibility of the family they have to send to that their child towards the school right काहे कि सेंड करिबे जदी न करिबो the government will take action against the father mother it is a responsibility of the family it is a responsibility of the what teacher that say village ro teacher responsibility कि से छुआ को स्कूल को आनिबो बापा मार responsibility छुआ को स्कूल को सेंड करिवे पठेबे जदी ए माने से responsibility न ले तांको अगेंस्ट एक्शन निया जी तो हम कंट्री रो इलिटरेसी हटिबो एंड ऑल द पर्सन मस्ट बी लिटरेट जोटे के एटा फंडामेंटल राइट्स रे अछि फंडामेंटल ड्यूटी रे अछि डायरेक्ट डीपीएसपी रे मध्ये अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सबुथि आकु रखा गला राइट टू एजुकेशन दा 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटी रे 11th नंबर रे हमर राइट टू एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल करिके हमर इंट्रोड्यूस करा जाय छी सेटा हमर ड्यूटी मध्ये ड्यूटी कार फादर ड्यूटी कार मदर ड्यूटी फैमिली रो ड्यूटी टीचर कि से छुआ जाउनी ताको पठाओ स्कूल को हैला एंड राइट टू रिलीजियन एटा मने रखिबो पिला माने एटा होची बहुत इंपोर्टेंट राइट टू रिलीजियन मु एठी कहि दोची कारण एटा एठी आसिला कहि के राइट टू रिलीजियन कोन ना एवरी पर्सन सपोज रिलीजियन आई बिलोंग्स टू हिंदुइज्म नो हिंदू आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजियन मु कन्वर्ट करिया को चाहूची कोन करिया को चाहूची मु क्रिश्चियनिटी को जिबा को चाहूची आई कैन adopt Christianity. I want मु जिबा को चाहूची मुस्लिम I can मु बुद्धिस्ट हबा को चाहूची I can मु सब किछि को जाई पारि as per my choice as per my opinion as per my wish nobody can but एठी कोन गोटे कंडीशन लागुची कंडीशन हैला nobody can force you forcefully केही तुमको किछि कर परिबे नाही you whatever may be the decision whatever may be the step you will take that is as per your wish as per your choice I cannot force you mu तुमको force करि परिबेनी जदी force करिबी कोन हबो एटा मु वायलेट कली कहार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो रूल को राइट टू रिलीजन मोर अधिकार अछि मु कोनोसी वर्शिप माने कोनोसी जो ये रे जाई के मु बसी परिबी मु जिबी क्रिश्चियन जो क्रिसमस रे मु आज जाई के मु चर्च रे जाई के प्रे करि परिबी मोर सेटा इच्छा मु मस्जिद को जाई परिबी दैट इज माय चॉइस बट मते की फोर्सफुली करबन तू चल चर्च रे प्रे कर सेटा करि परिबन मो पर जोटा कि हम जदी गोटे एग्जांपल नबा हां हमर जो कंधमाल एरिया रे आस्तिले फॉरेन रो आस्तिले जो फॉरेनर आसी की क्रिश्चियनिटी रे कन्वर्ट करथिले सब माने लोकन को जनरली तो मान आस्तिले कोन तो समान तो बहुत माने कोन सेते सही टाइम रे बहुत पोर आउ माने लोअर लेवल को बिलोंग करथिले सब तो तांको सेते नॉलेज नथिला तो समान को आसी की पैसा ये सब दबु आमे तमे कन्वर्ट करिवो ए सब टाइप रे समान को कोन कन्वर्ट करथिले कंधमाल एरिया रे हां तो सेठु कोन हैला
सो बेसिकली जने हस्बैंड वाइफ और तांको दिटा छुआ स्टेवन तांका नाटा कोन गोटे हैला सो से गोटे आसिले से मन तांको एमती सब कन्वर्ट करूथिले तो सेठी दारा सिंह एंड तांकर एसोसिएट जते सब थिले सो एटा को अपोज कले तो से मानिलेनी तो कौन हैला फाइनली एंती गोटे माने सिचुएशन हैला जोटा कि सिचुएशन ता नोइंगली तो हेइनी केबे भी हमें कहबा अनोइंगली से सिचुएशन हेइथिबो कि कोन व्हाटएवर मे बी इज देयर हमें तो जानि नै ता ऊपर बहुत एनालिसिस करियो पड़िबो तो ये कोन कले तांको पनिशमेंट दबा पई कोन गोटे करथिले अल्टीमेटली तांको वाइफ आउ से निजे जो पर्सन हां फॉरेनर आउ तांको दिरे छुआ से कार रे जळी जाइतिले समस्ते जिंदा जोथि पई एबे पर्यंत दारा सिंह एंड तांका एसोसिएट्स लाइफ इम्प्रिजमेंट पाउचंती एंड तांको को लाइफ इम्प्रिजमेंट सहित तांको को फांसी रो जोटा कि येटा दिया जाइछि किंतु स्टिल चलीछि हियरिंग सेटा देखिबो एटा अछि सब आगा हमर गूगल रे हैला सो एटा गोटे केस स्टडी जोटा कि बाय फोर्सफुली यू कांट डू एनीथिंग किछि भी हमें फोर्सफुली कर परिबा नै कहा सहित किछि भी जिंस सहित सो इट इज द राइट टू रिलीजन हैला एंड फाइनली हैला पिला माने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैला सिक्स फंडामेंटल राइट सिक्स नंबर से कोन कहूची ना जदी आमे एई पांचटा राइट को कोटा राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रिलीजन जदी कोनोसी प्रकार राइट को आमे वायोलेट कोन कले मु फोर्सफुली तुमको कहबी तले तुम क्रिश्चियनिटी को ये करबो हैला मु तुमको कोन कली ना ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन करली कास्ट अनुसार हैला कोनोसी राइट को जदी मु वायोलेट मु तुमको कहबार अधिकार देलिनी राइट टू स्पीच को वायोलेट हैला कोनोसी अधिकार को वायोलेट मु कली देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहूची आई कैन गो टू द कोर्ट डायरेक्टली जोटा कि हमें जाई परिबा कोर्ट की हमें सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाई परिबा न त हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट रो उठी जिबा ना जदी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहूची जदी ए सब रूल को वायोलेट हैला then I'll go directly go to the court and I'll take action against the person सेटा हला constitutional remedies कौन सी अच्छा मु तो कहबी मु तो अधिकार देबी मते मोर किए कोन कर दबो को मते किए कोन करियो मु देबिनी तते ता माने कोन हो मु तो किछि करि परिबी ना अनेबल टू डू एनीथिंग ना सेठी मु स्टेप नै परिबी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को मु जाई परिबी सो एटा हला हमर प्यार पिला माने फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार तापर तमरो डीपीएसपी अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 36 रो 51 ए आर्टिकल जोटा कि हमर अछि कोन ना फंडामेंटल ड्यूटी खाली राइट्स को एन्जॉय करबनी ड्यूटी मध्ये अछि हमर भारत माता प्रति हमर किछिटा ड्यूटी अछि केतेटा सित्रे 11 टा ड्यूटी को डिस्क्राइब करा जायछि राइट जोटा कि लास्ट नंबर ड्यूटी टा हला एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एंड 10 टा ड्यूटी भितर जदि हमें कहबा मैम हमर कोन ड्यूटी जेमति कि हमें नेशनल फ्लैग को नेशनल एंथम को ए सब को हमें रिस्पेक्ट दबा से माननकु फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर को हमें रिस्पेक्ट दबा राइट जेमति कि हमर अधिकार होची वुमेन को हमें रिस्पेक्ट दबा हमें प्रोटेक्ट करबा हमर कोन जेमति कि हमर जते सब हमर कंट्री रे जते सब माने वैल्यूएबल थिंग्स को हमें प्रोटेक्ट करबा जेमति कि हमर हिल्स हला माउंटेन हला रिवर हला बर्ड हला एनिमल हला समान को प्रोटेक्ट करबा सेति पई कि गोटे धर जने जाय कि हरिण को हिट करूची ताई काई ता ऊपर एक्ट लागुची काई ताको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाउची कारण ये बहुत सारा ये रे सलमान खान जो कोन कस्तूरी मृग ताको जो ये करथिला काई ताको जेल जीवा पला से कस्तूरी मृग पई बोली सो ए सब तुम करि परिबनी सेटा हला हमर नेशन रो गोटे वैल्यूएबल थिंग्स हम ताको प्रोटेक्ट करबा सेटा हला हमर ड्यूटी आउ नेशनल इमरजेंसी टाइम रे हमें समस्त नेशन को डेडिकेट हबा जदी किछि समति इमरजेंसी आसेला सेई टाइम रे हम प्रॉपर्टी हमर रहि के रहबनी सेटा नेशन रो प्रॉपर्टी हि जिवो हमर बैंक बैलेंस हमर रहि के रहबनी सेटा नेशन रहि जिवो आउ हमें सेई टाइम रे समस्त नेशन को डेडिकेट करबा नेशन को हमें हमर जिते पारिबो हमें कंट्रीब्यूट करबा एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी एमति कोइ कि तमरो 11 टा अछि फंडामेंटल ड्यूटी ताको देखिबो कोन कोन ड्यूटी सो पिला माने ए सब हेला दिया जाय काहा को ना हमर कंप्लीटली सब फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
towards the people for the betterment of the people and the society. पिला माने बुझिलो कि एतिकी? Yes or no? पिला माने Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरा क्लियर तो आको मने रखिबे टाइप रो हैला तो ग्यारंटी राइट्स टू द लेबर हैला सला तापर आसला कोन ना ग्यारंटी राइट्स तो हमें आसी गला कोन राइट्स हमें जानिले देन industrial conflict minimized. The objective of labor legislation to minimize the industrial conflict, misunderstanding. Conflict leads to what? Dispute leads to strike. Strike means it is so many things can happen in the industry, right? So ultimately what we will do, now we have to minimize the conflict, misunderstanding को झगड़ा को आगे बंद करो किए करिवो जदी इंडस्ट्री आकु स्टॉप करिवो एटा ऑब्जेक्टिव वाला लेबर लेजिस्लेशन रो लेबर लॉ रो राइट जदी हम इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट कोन कहली कॉन्फ्लिक्ट लीड टू डिस्प्यूट तो हम एटी कोन करबा कॉन्फ्लिक्ट को जदी मिनिमाइज कर देबा डिस्प्यूट ही होबनी तो सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इफ एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इट इज देयर ऑर्गेनाइजेशन माने तो कॉन्फ्लिक्ट माने तो डिस्प्यूट हबो तो हमें जदी डिस्प्यूट हला तो हमें केबे डिस्प्यूट को सॉल्व करबा we will discuss one chapter industrial dispute act 1947 no solving industrial dispute I mean industrial dispute how we can solve it and it is the objective of labor law we have to solve the conflict and we have to solve the dispute legal action against unfair practice if anybody any kind of unfair practice doing in the industry it is the responsibility of the every individual they can take legal action against the person ये अनफेयर प्रैक्टिस करिवो अनफेयर प्रैक्टिस फ्रॉड कला गुटे वर्कर हैला वर्कर को मध्ये पनिशमेंट हबो आ कोन वर्कर पई लॉ आसला कहि कि वर्कर कोन मन इच्छा सब करिवो ना कोन ना सो अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस द पर्सन जे भी हो ना काहे कि अनफेयर प्रैक्टिस डूइंग बाय द एम्प्लॉयर अनफेयर प्रैक्टिस डूइंग बाय एनीबॉडी इन द इंडस्ट्री so we have take as a person I can take the legal action against the person say objective नहीं किया सिला किया labor law then action against exploitation already I told you exploitation it means neither mentally nor physically any kind of exploitation should not be there towards the employee those working in the industry it may be the child it may be the specifically women को child को तामाने मैम men को कोन exploitation होनी so ताको मध्य हमें step नबा काहा को भी exploit हमें करि परिबा नहीं right trade union formation and recognition आउ कोन objective हैला ना ट्रेड यूनियन को फॉर्म करबा इंडस्ट्री रे आमे वी वांट टू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन आमे डीडीसी रे गोटे मैम यूनियन फॉर्म करिया को चाहू हाउ वी कैन फॉर्म द यूनियन फॉर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सेई जो एक्ट रे जो अच्छी रूल्स रेगुलेशन टर्म कंडीशन सेई अनुसार आमे गोटे यूनियन फॉर्म करि परिबा सेटा आमे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रे पढिबा एटी खाली तार ऑब्जेक्टिव टा सुनिथा सो कौन करिवो ट्रेड यूनियन को फॉर्म तो करिवो फॉर्मेशन एज वेल एज द रिकॉग्निशन ताको रिकॉग्नाइज करा जिवो केमिति रिकॉग्नाइज करा जिवो सो तार रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेशन एंड रिकॉग्निशन इट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट सेरा थिला तार ऑब्जेक्टिव राइट इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी सी conflict will while the conflict minimize while the industrial dispute minimize peace and harmony automatically it can be enhanced जोठी हम झगड़ा बंद हो जिवो सेठी तो शांति ही शांति रहिबो ना जोठी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग झगड़ा ए सब को हम स्टॉप कर दबा सेठी शांत शिष्ट परिवेश हमें डेवलप करबा तमेंटी कोन कहूची इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी शांति श्रृंखला हमें मेंटेन करबा सेटा थिला कार इंडस्ट्रियल लॉ रो अछि इंडस्ट्रियल लॉ रो ऑब्जेक्टिव आ कोन करबा ना ओल्ड एज इलनेस disablement benefit to workers old age benefit old age after retirement benefit provided by the Indian Constitution कौन benefit पाइबो गोटे लोको illness देह खराब हैला कौन benefit पाइबो disablement any kind of injury जितले काम करिबा टाइम रे इंजुरी हैला जोटा की कौन हैला इंजुरी रे ना it may be partial disablement it may be total disablement or it may be temporary disablement any kind of disablement is there right so say sabuku ame kon what kind of benefit we will provide to the worker so that the worker can maintain himself and herself and as well as the family भले से मेंटेन करि परिबो सेहि पय हमर कोन अछि गोटे एक्ट अछि वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 सेहि रे पढिबो बेनिफिट कोन कोन आमे दउचे राइट
ତା ଛଡା କଣ ହବ ନା ନେଗୋସିएशन प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कला ना नेगोशिएशन जोटा कि आगु नेगोशिएट कहा से नेगोशिएट करियो हु विल नेगोशिएट विथ होम किए कहा से नेगोशिएट करिवो मैम कौन नेगोशिएट करिवो employer the worker the trade union will negotiate with the employer right employer negotiate करिवो कहा सहित सॉरी वर्कर्स negotiate करिवो कहा सहित employer सहित employer negotiate करिवो कहा सहित वर्कर सहित दुई जन के सहित negotiation करिवे negotiate कौन करिवे ना in case of wages in case of salary in case of basically we can say the bonus in case of any kind of facility and benefit केमिति करिवे कोन एमति आसले बसले negotiate करतेले ना for that collective bargaining is there जोटा कि गोटे chapter it is there in your unit 1 collective bargaining through this they can negotiate to each other right so सेटा गोटे प्लेटफॉर्म से थ्रू रू समान negotiate करिवे जोटा कि for the labor benefit and for the management benefit and last है कोन ना social condition maintain society रो condition को सुंदर भाव मेंटेन करा जिवो केमिति मेंटेन करा जिवो एतला ऑर्गेनाइजेशन भले से वेल मेंटेन्ड हबो well organization well maintained then society development can be possible पिला माने organization daily कोन हबो daily dispute daily strike हला ए सब हबो ultimately कोन हबो organization कहा पय society पय तो society ultimately suffer करिवो धरो ओमफेड स्ट्राइक कला खीरो पाइबानी इलेक्ट्रिसिटी वाला स्ट्राइक कले लाइट पाइबानी पानी वाला स्ट्राइक कले पानी पाइबानी जो वाला को बॉस वाला स्ट्राइक कले कम्युनिकेशन हे पारिबनी फूड इंडस्ट्री वाला स्ट्राइक कले खाइबा पाइबानी ये वाला स्ट्राइक कले टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्राइक कला पिंदिबा पाइबानी को इंडस्ट्री ता आ भीतर स्ट्राइक करबो बैंक स्ट्राइक करबो पैसा केमति पाइबा को इंडस्ट्री ता कोंतु जोटा कि स्ट्राइक कले हमर बेनिफिट हबो आमे लॉस ही लॉस हबो सोसाइटी तो आमे सोसाइटी को गोटे कोन करबा सोसाइटी सोशल कंडीशन को वेल मेंटेन करबा केमिति जेते इंडस्ट्री वेल मेंटेन्ड हबो जेते इंडस्ट्री वेल डेवलप हबो then society condition also can be maintained so these are some major objectives fixed by the Indian constitution towards the labor law labor legislation ei objective neki asila and ei objective ko ena fulfill kara jauchi clear na pila mane बुझिलो कि स्टूडेंट्स Yes, ma'am. देखो एडी डिजाइन कर देछि LEGIS LATION L for labor standard increase E for economic condition enhanced G for guarantee rights to the labor एडी guarantee rights से छोटा को फंडामेंटल राइट को मन रखिबे हैला ए अनुसार ऑब्जेक्टिव एतिको को मन रखिबे क्लियर सुनो HR स्पेशलाइजेशन पिला माने HR स्पेशलाइजेशन विदाउट लेबर लॉ HR specialization completely useless. HR specialization means कहा को बुझौची लेबर लॉ को इंडस्ट्रियल लॉ को तो आकु आगे पूरा भल्लो भाबरे पूरा माइंड रे रखि दियंतु टिके आपन को माने कोन कहिले टिके मने रखिया को पड़िबो बट इट इज क्वाइट इंपोर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल कार पुनी साउंड आसिला quite important for every individual हैला मैम पीडीएफ पठे देबे कि तीन क्लास रो पाठर नाम आउरी आरंभ होइनी बुझिले पाठ आउरी स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास आउरी पाठ कंप्लीट हेनी कोन नाम को पीडीएफ ने कोन आचार डालिबे कहिले कोन करियो से पीडीएफ को नेगिरी किछ लाभ अछि से पीडीएफ रो जडी पाठ जान नथिबे पीडीएफ को मारो गोली आगे पाठ पढंतु 10टा क्लास आगे पाठ पढ़ी सारंतो 10 क्लास रे सब मैम पचार लालू बुझी जाइथिबे तापर से पीडीएफ रो वैल्यू होबो तो पीडीएफ रो तापर कोन वैल्यू मते कोंतु Yes, ma'am. बही मु आमे बुक्स दोचु से बुक्स मैम हमको बुक्स नहीं गले ताको नहीं गिरी पूरा रखिले जे केबे खोलिलेनी से बुक्स रो किछ वैल्यू अछि किछ वैल्यू नै कंप्लीटली यूजलेस आको नै कोन बुझिबे कहले मुझे हां वेरी गुड हां किछ दरकार नै मुझे ती पढेबे मच मोर एनफ हैला आपण आगे फास्ट रे 10टा क्लास पढंतु ध्यान पूर्वक पचार लालू सब बुझंतु इंटरेक्शन करंतु हैला नॉइज करंतु नियमती साउंड करिवेनी हैला वो तापर मैम पीडीएफ ता लास्ट क्लास मैम पीडीएफ ता कहिले गोटे टीचर कहबो जाहाउ मो माने मोर एफर्ट ता माने यूजफुल रही यूजलेस है
ना ठीक ठीक अच्छे ना मैम बुझ स्टूडेंट्स? हाँ बुझी गले तो ध्यान रे आगे हाँ क्लास अटेंड करंतु सब आगे पढंतु तापर लास्ट क्लास रे कहबे मैम पीडीएफ देबे हला बुझिले ऑब्जेक्टिव Yes, पर्यंत बुझी ma'am. गले पिला माने Yes, हाँ ma'am. यस मैम ओके ओके सुनंतु तापर चलंतु आउ केते आउ 5 मिनिट पढेबी हला पिला माने टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन खाली एठी कहि देथिबी तापर काली एटा कंटिन्यू करिबी टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन पिला माने पुनी टिके म्यूट कर देबो types of labor legislation also we can called as scope of labor legislation also we can called as a classification of labor legislation कौन एटा को कहिबा टाइप सहा एई पिला माने टाइप सहा को देखिले ना कौन कहबो घसीराम बाग किए रे घसीराम बाग तो मु कहबी कोन ना सब आगो म्यूट कर दियो कारण अनम्यूट म्यूट कर देला माने आपण माने किछ डाउट पचरी परिबेनी एटा टिके डाउट पेपरटा आ जदि आपण माने डिस्टर्ब करिवे मु कोन करबी हां टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन पिला माने सी टाइप्स स्कोप एंड क्लासिफिकेशन तीन टाको समान मन रखिबे टाइप्स असला को लिखिबे स्कोप असला को लिखिबे क्लासिफिकेशन असले मध्ये आको लिखिबे तो टाइप स्कोप क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी चारिटा वे क्लासिफाइड करा जाय कोन ना द फर्स्ट सी इट मींस कोन मैम लेबर लेजिस्लेशन ता हमर चारिटा मेन पिलर लेबर लेजिस्लेशन Ma'am, चारिटा ma'am, I don't know Oriya, ma'am. okay okay fine labor legislation having 4 leg चारिटा लेग अछि चारिटा गोडे सुनो हमें दो हमें ओडिया को आसचु तो जत्ते जहा कोले पाटर कोन बाहरियो कहले ओडिया ही बाहरियो हां labor legislation having 4 most important part now labor legislation having 4 most important part now one is the legislation labor law labor legislation related to regulatory it is the most one part second one is the protective third one is the wage related and fourth one is the social security so types of labor legislation it is 4 types first one is the regulative second one is the protective third one is the wage related and fourth one is the social security so what happened regulative labor law try to regulate the relationship between employers to employer employers to trade union workers to trade union so among all the person it means what each and every kind of relation we will regulate in the industry through how through we have having different acts how we can regulate the relation first is the labor law related to regulation we will regulate some relation how we can regulate the relation among the people now who are the person now it is the basically we will regulate the relation between management to it means worker maintain in it how we can regulate how we can maintain now for regulation having 3 most important act तीनटा एक्ट हमर रेगुलेशन अंडर रे कवर कला से तीनटा एक्ट कोन आसिला ना द ट्रेड यूनियन एक्ट 1920 Hello, ma'am. standing order act 1946 so dear Ma'am, students voice is not breaking. Ma'am, voice is breaking. वॉइस ब्रेक होची कि रे पिला माने Yes, ma'am. सुबह As a गला buffer. अच्छा वॉइस ब्रेक कला अच्छा एना सुबह गला Yes, yes. बेले बेले तो अप एंड डाउन हबो रे टिके वॉइस रे एना क्लियरली आसिला पिला माने Yes, ma'am. ओके ओके तो कौन है इठी तो अंडर द रेगुलेशन
under the regulation having three most important act. It relates to Trade Union Act mane rakhibo. Regulative under the most important act, it including what it includes: Trade Union Act 1926, Industrial Dispute Act 1947, and Industrial Employment Standing Order Act 1946. It means based on these three acts, we can maintain healthy relation in the industry. There should not be any kind of conflict, confusion, as well as the dispute in the industry. If such kind of things will happen, so we can regulate the relation, we can maintain the relation based on these three acts. ये तीन act को लेके हम relation को maintain कर पाएंगे. So कौन है? ना trade union, industrial dispute, as well as the Industrial Employment Standing Order Act. These three acts including regulation मने रखिबो. हैला? Trade Union Act 1926. Now, Indian Constitution adopted Trade Union Act at the year of 1926. Dispute Act at the year of 1947. And Industrial Employment Standing Order Act 1946. So it including the legislation related to regulative. Legislation related to protective. Protective means to protect the worker. How we can protect the worker? So workers are working in a different factory. Workers are working in a mines. Workers are working in a plantation. So different area workers are working. So how the industry should protect the worker? Worker को हमें केमिति protection करिबा, केमिति protect करिबा. Some workers are workers are working in a different factory, right? So factory, it may be the public sector factory related to public sector, or factory related to private sector, right? So whatever may be that, सेटा हेई परे हमरो राउरकेला स्टील प्लांट हो कि हमरो सेटा हो कि टाटा हो. So ultimately workers are working in a public sector organization as well as the private. So if the workers are working in a different factory, now what are the facility we will provide towards the worker so that they will not face any kind of problem while they are working in a different dangerous, or in fact in a different area, in front of the machinery, in front of the, it may be the machinery, or it may in front of the maybe the what, the dangerous machinery. So what kind of protection the industry organization should provide? What kind of protection the factory should be provided towards the worker? It is there in the Factories Act 1948. सबो factory cover है बेचरे. जितने सबो factory अच्छे the public sector as well as the private sector factory. So as for the Factory Act 1948, having so many rules, regulation, the factory will provide, the employer will provide towards the worker. People are working in a mines. से अनुसार हमें सेमान को protect करिबा. Factory Act जितने मु पढ़े भी तार article, तार section से सबो भर्ती के अच्छे. हैला chapter सबो अच्छे. People are working in a mines. As for the mines, amar jota ki joda Bodville se सब mines से पूरा भर्ती के अच्छी. So कौन ना, as for the Mines Act 1952 रे जहाँ जहाँ सब rules regulation no, whatever may be the things adopted by the Indian Constitution, those people are working in a mines. The mines, the employer will provide such kind of facility to that particular person. केते डेप्थ रे खोला हबो सेठी ऑक्सीजन आस्तबो जाइतिबे खोला जाइतिबे ऑक्सीजन पाउ नथिबे मरि जिबे लोक आको. So कोन what is the things the organizers, the mines employer will provide towards the worker? It is everything, it is there in the Mines Act. Plantation 1951 adopted by the Indian Constitution. People are working in a different area, plantation like tea, coffee, rubber, jute, no, Tata, पूरा plantation, पूरा coffee और tea रो पूरा वागान अच्छी को Tata रो. But it is private. तो केमिति ताको कोन दिया जिवो facility जोटा कि people are working morning to evening से माने कोन completely बाहरे काम करछंती. फैक्ट्री तो भितरे काम कले माने बाहरे काम कले खरा वर्षा शीत फील्ड रे काम कले ताले माने कोन फैसिलिटी दिया. व्हाट आर द फैसिलिटी द प्लांटेशन शुड प्रोवाइड? कोन फैसिलिटी प्रोवाइड करिवो? तमन को रेनकोट दिया जिवो, समन को अम्ब्रेला दिया जिवो, राइट? बीडी एंड सिगार वर्कर, बीडी सिगार निकोटिन एरिया, राइट? तो को लोक माने काम करिवे से माने कोन फैसिलिटी दिया जिवो? निकोटिन रही रही कि जल्दी डिजीज है कि सब मरी जिबे नले. Cigar worker Act Tasla 1966 रे. So basing on this, the organization will provide such kind of facility. No protection.
The industry should protect the worker. Worker are working a different area. It may be workers are working in a different factory, belongs to mines, belongs to plantation, belongs to BD, cigar or other nicotine area. Right? So what kind of facility the organization should provide to the worker? So the worker must feel safe. Should not face any kind of danger, physical threat. So this relates to the protection. What I told you, labor legislation, it is broadly classified into 4 categories. First one is the regulative, second one is the protective. Under regulative, these 3 acts, through these we can regulate the relation, and through these 4 acts, we can protect the worker. So the relation को maintain करिबा तो protection दबा. बुझिलो कि पिला माने एई पर्यंत बुझि गला? I hope पूरा Yes, clear ma'am. थिबो? किछि doubt? Yes, ma'am. पूरा clear ना? Yes, ma'am. Yes ना? Okay, चलो. तो काली ए type I will continue, right? Regulation protection सला, wage related social security I will discuss. Then I'll discuss growth and development of labor legislation. Then I'll discuss the growth and development ପରେ ଅଛି गुटे ILO, International Labour Organization. I will complete, सेती complete करिकी I'll start Factory Act 1948. 10टा class भितरे I will try to finish your syllabus. हैला? Ma'am, Oh, bye bye. what is the 4th type of labor legislation? First one is a regulative, second one is a protective, Yes. third one is a wage related, fourth one is a social security. Social Yes, ma'am. security. Security. ठीक है? Yes, And ma'am. what the acts Yes, ma'am. will cover, what are the act cover under the social security, I will tell you later tomorrow. Yes, ma'am. Thank you. ठीक है? Okay, Yes, ma'am. okay. चलो, Thank thank you, students.